Ganga Devi approached Krishna in a lot of anxiety. तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में जैसे बताया गया है कि जब कलयुग आ रहे थे तो गंगा जी भगवान को जाती है और बहुत उनके पास मतलब कष्ट होता है, दुख के साथ वो भगवान से कहती हैं. Ganga started by saying, Krishna, your pastimes are coming to an end here on this planet, and already there are people becoming more and more sinful. And as Kali Yuga progresses, they'll become more and more sinful, and so many sinful reactions will take place, and they'll bathe in my waters. What am I supposed to do with all these sinful reactions? तो गंगा जी भगवान श्री कृष्ण से बोलने लगी कि भगवान अभी कुछ दिनों पश्चात ही आपकी जो ये लीलाएं हैं आप उसको समाप्त कर अपने धाम चले जाएंगे, और कलयुग का जैसे प्रभाव हो रहा है तो लोग धीरे धीरे बहुत पाप कर रहे हैं, और यदि वो ऐसे ही पाप कार्य करते रहेंगे और मेरे जल में आकर स्नान करेंगे तो मेरा क्या होगा. So Krishna responded, Ganga Mata, don't worry. In 5,000 years, my mantra upasaka, worshipper of the holy name, will appear, and he'll travel all over the world, make many pure devotees, and those pure devotees will come and bathe in your waters and free you from all these sinful reactions. तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. 5000 के बाद हमारे कुछ भक्त लोग आएंगे जो ये मंत्र के जो उपासक होंगे, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप करेंगे, तो वो सब लोग जब आप में आएंगे और स्नान करेंगे तो आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी. Some scholars say that mantra upasaka is actually Sri Chaitanya Mahaprabhu, but Lord Chaitanya, he loved his devotees so much that he gave the facility to Srila Prabhupada to do it on his behalf. तो बहुत सारे विद्वान हैं, वो लोग सोच रहे थे कि अरे ये तो शायद महाप्रभु करेंगे, लेकिन महाप्रभु इतने कृपालु हैं कि वो कोई भी जो क्रेडिट है बोल सकते हैं अपना नहीं लेके अपने भक्तों को देना चाह रहे थे. तो इसीलिए हम देखते हैं कि अभी जो शिला प्रभुपाद और अन्य भक्तों की उन्होंने ये क्रेडिट दिया. So then there's Lochan Das Thakur in Sri Chaitanya Mangalam. Also this is 500 years ago. There's the Senapati Bhakta, that will go worldwide and with a chopper of Nam Sankirtan free people from sinful life. तो चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर जी लिखते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी जाएंगे और पूरे विश्व में हरि नाम करेंगे और सारे लोगों को उनके पापों से मुक्ति देंगे. And then there's also when Prabhupada this is before, while he was still in the Grahastha ashram, he was developing his pharmaceutical business in Mumbai, and he fundraised to build a temple there at the request of the sannyasis that Srila Prabhupada sent there that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sent there to establish this temple. तो श्रीला प्रभुपाद जी जब गृहस्थ आश्रम में थे तो उनकी दवाइयों का बिजनेस था, तो उस वक्त वो मुंबई गए थे और जो गौड़िया मठ थे उनको स्थापन करने में श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को उन्होंने मदद किया, ये आर्थिक मदद कलेक्ट करके. And because Prabhupada was so successful in helping him get the temple established, the sannyasis approached Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and asked him, well, could he be the temple president? तो बहुत सारे सन्यासी जब देखे कि श्रीला प्रभुपाद जी इतने दक्ष है, इतना ज़्यादा धन राशि ले आ रहे हैं, तो उन्होंने भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को बोला कि हम लोग क्यों ना इनको मंदिर का अध्यक्ष बना दें. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur responded to the sannyasis, you leave him alone. In due course of time, he will do everything. तो श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बताया कि अभी आप उनको छोड़ दीजिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, जब समय आएगा तो बहुत सारी चीज कर लेंगे. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur knew who Srila Prabhupada was.
तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जानते थे कि हमारे श्रीला प्रभुपाद जी कौन है। So Prabhupada wasn't very conscious, as I mentioned earlier, of these predictions. He just was so deeply committed from the very first meeting with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur to following his instructions. तो श्रीला प्रभुपाद जी जितने जो भविष्यवाणियाँ हुई थी पहले, तो उसको लेकर उतने ज़्यादा ये नहीं थे कि हाँ ये तो मेरे लिए ही की गई है, बल्कि वो क्या किए, जब पहले दिन से जब उनसे मिले तो उनके निर्देशों को कैसे पालन करें उसके विषय में ही उनकी ज़्यादा चिंता थी। I'm sure most of you have heard the story of how Srila Prabhupada was a young boy growing up, and his father, very Prabhupada described him as a pure devotee, would always invite sadhus over for lunch. तो हम लोग देखते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी जो अपने मतलब युवक अवस्था में थे, तो उनके पिताजी बहुत ही धार्मिक थे और बहुत सारे साधु लोग को अपने घर में आमंत्रित किया करते थे। But these sadhus, most of them weren't very serious, and oftentimes Srila Prabhupada, at that time of course Abhay Charan, he would see them, they take their saffron cloth off and smoking beedi, this nonsense, one thing after another. तो जैसा हम देखते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी अपने पिताजी के विषय में बताते हैं कि वो शुद्ध भक्त थे, लेकिन ये जो ऐसे वैष्णवों को बुलाते, मतलब ऐसे साधुओं को बुलाते थे, तो उनका जो आचरण था वो सब ज़्यादा ठीक नहीं था। कभी कभी कपड़े खोल देते थे इसी तरह और सिगरेट पीने लगते थे। So Prabhupada was kind of a leader of all of his, he's kind of a natural leader, and his friends had somehow or other come in contact with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So Narendranath Malik wanted Prabhupada to go with him to hear from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, so he could confirm their understanding that here was a real sadhu, a very advanced Vaishnava. तो जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे प्रभुपाद जी ऐसे साधुओं के जब देखें तो उनका थोड़ा सा ऐसे अच्छा नहीं लगा, तो फिर उनके जो एक मित्र थे नरेंद्रनाथ मल्लिक, तो वो सोचे कि इन्हें अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिलाते हैं तो इनको वैष्णवों के विषय में एक सही जो है पता चलेगा कि साधु कैसे होते हैं, तो उनको वहाँ ले जाने का प्रयास किए। So, see, I kind of lost the train of thought there. नरेंद्रनाथ मल्लिक। Oh yeah, Narendranath. Yeah, actually, he was a family member. Yeah. So उनके वो पारिवारिक एक व्यक्ति थे नरेंद्रनाथ मल्लिक। Like a cousin to Srila Prabhupada. And so they went to meet Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and because they were part of Bengali culture, when they entered the room, they offered prostrated obeisances to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. तो जैसा हम लोग देखते हैं कि वो बंगाल में थे, तो जब वो लोग जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में गए तो ऐसी सभ्यता थी कि साधु को देखते मात्र क्या करना चाहिए, एक दंडवत प्रणाम कर देना चाहिए। तो उन लोगों ने भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दंडवत प्रणाम किया। And as they were rising, even before they had fully gotten up and found a seat, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said to both of them, "You're educated young men. Why don't you dedicate your life to preaching the philosophy, the teachings of Lord Chaitanya to the English-speaking world?" तो अभी वो लोग दंडवत करके पूरी तरह उठे भी नहीं थे और अपने जगह पे मतलब बैठे भी नहीं थे, तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी दोनों की तरफ देखने के पश्चात बोले कि आप दोनों लोग तो शिक्षित युवक हैं, आप ये चैतन्य महाप्रभु के वाणी को ये पाश्चात्य देशों में क्यों नहीं प्रचार करते हैं। So all of you have heard that, but what's really significant, on their very first meeting, Srila Prabhupada, it just struck him, so deep, it went deep in his heart, and he accepted this instruction and made it his focus in life for the rest of his life. तो ये पहली जो मुलाकात है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो वाणी उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से सुना तो उनके वो हृदय में भेद कर गया और उनके हृदय में ये वाणी बैठ गई और पूरे जीवन मतलब वो इस वाणी को प्रचार करने के विषय में सोचने लगे।
So although he didn't actually take Diksha till quite a bit later, he deeply accepted within his heart Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur as his guru. तो बहुत समय के पश्चात जैसा हम लोग जानते हैं कि उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से दीक्षा लिया, लेकिन अपने हृदय में उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को अपना गुरु मान लिया. So then he was, Srila Prabhupada would very frequently study the Vaishnava books and the commentaries of the Acharyas, and as he was reading Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary on Bhagavad Gita 241, Vyavashyatmika Buddhir Ekiha Kuru Nandana Bahu Shakayanantascha Buddhayo Vyavashayanam. Those who are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many-branched. तो हम लोग देखते हैं कि जब वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब इसे मिले और उनकी जो वाणी सुनी, तो बहुत सारे कमेंट्री पढ़ रहे थे वो वैष्णव की टीका. तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जो भगवत गीता की दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक नंदन, तो उसमें जब वो देखे कि हाँ ये जो आपके जो वाणी है भगवान के प्रति, उन गुरु के प्रति, उसको कैसे एकनिष्ठ होना है. So that Vyavashyatmika Buddhi, is Vishwanath Chakravarti Thakur describes how one should make the order of the spiritual master one with his heart and soul. In other words, go very, very deep in it. Focus your whole life on it. तो जैसे यहाँ बताते हैं कि जो अपने गुरुदेव की जो वाणी है उसको अपने जीवन का चरम उद्देश्य बना लेना है. वही उद्देश्य जो हमारा जीवन होना चाहिए, वही हमारा प्राण होना चाहिए. Okay, so there's the predictions, but then how did Srila Prabhupada, and then he accepted what Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur offered him. His plan was to become very, very wealthy and then give all the money to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur through his pharmaceutical businesses. तो हम लोग देखते हैं कि कैसे उनका जो एक मिशन था कि वो बहुत बड़े एक अमीर व्यक्ति बनेंगे और उनका जो फार्मा का बिजनेस है उसको बहुत आगे लेके जाएंगे, और फिर ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो निर्देश था तो कैसे उसको अपने जीवन में एक प्रकार से समाहित किए. But Krishna had another plan for Srila Prabhupada, and that was that the businesses, they went well for a while, but then there was one calamity after another. So he realized that wasn't the way Krishna wanted him to do things. तो जो भी उनका प्लान हो, भगवान का कुछ और प्लान था. तो कुछ दिनों पश्चात ही जब उनका बिजनेस बढ़ रहा था, लेकिन अचानक एक के बाद एक बिजनेस में बहुत नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनका बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गया. So anyway, prior to, he ended up taking sannyas and then moved into the Radha Damodar temple. And he saw this very, very powerful arrangement of the Lord to prepare him for his worldwide journey. तो उन्होंने संन्यास लेने से पहले भी जब राधा दामोदर मंदिर में जब वो गए तो फिर देख रहे थे कि ये पहले की घटना है, तो वो सोच पा रहे थे कि अरे ये सब चीज़ें कैसे एक भगवान श्री कृष्ण का ही एक अरेंजमेंट था कि मैं इस चीज़ों की मुक्ति पा पाया. I think probably most of you have visited his rooms at the Radha Damodar temple. If you have, please raise your hand. तो कितने लोगों ने राधा दामोदर जी का जो मंदिर में प्रभुपाद जी का जो रूम है वहाँ गए हैं, अपने अपने हाथ खड़ा कीजिए. We got about 95%. So you all know that Prabhupada would just look out his kitchen window and there was Rupa Goswami's samadhi. तो हम लोग जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ 95% भक्त लोग अपना हाथ खड़ा किए हैं. तो आप लोग देखे होंगे कि उनके किचन से जो एक खिड़की है वहाँ से वो जब देखा करते थे तो वहाँ श्री रूप गोस्वामी जी की समाधि है. So Prabhupada was very deeply studying, putting the Bhagavatam together for his trip to the West. And he also revealed to some of his senior disciples that all of the plans, the primary plans for developing ISKCON were revealed to him when he was at the Radha Damodar temple.
तो हम लोग जैसे देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब बुक लिखा करते पढ़ते थे तो फिर बहुत सारे जो उनके डिसाइपल्स थे तो उनसे जब बात किया करते थे तो उनको बताते थे कि जो हमने इस्कॉन की स्थापना की है इसकी जो पूरी रूपरेखा है, इसकी जो पूरी संरचना है जो बनाए हैं, ये सब चीज़ें उनको रूप गोस्वामी जी की जब समाधि थी वहाँ पे जब वो रहा करते थे तो उनको ये रिवील हुआ उनके हृदय में. So once Prabhupada revealed to Harikesh, at that time Maharaj, that Rupa Goswami actually came to him in a vision. And Rupa Goswami said, Maharaj, just go to the West and preach. Don't worry about anything. You'll be very successful because I'll be right there with you. तो एक बार ऋषिकेश महाराज जो उस वक्त सन्यासी थे तो उनको श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया कि एक बार रूप गोस्वामी जी उनके पास आए और बोले कि ठीक है तुम जाओ पाश्चात्य जगत में प्रचार करो, ये सब चीज़ें करो और सारी व्यवस्था मैं देख लूँगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा. So Harisari, who had so much association with Srila Prabhupada, and Prabhupada felt very comfortable in Harisari's association, so he revealed so many things to Harisari. And Harikesh Prabhu had told Harisari about what Prabhupada had told him. So Harisari just wanted to get confirmation, corroboration on this. तो जैसे हम जानते हैं कि हरीशौरी प्रभु जी बहुत ही प्रभुपाद जी के घनिष्ठ मतलब बोल सकते हैं उनके शिष्य हैं, उनको सभी चीज़ें बताया करते थे. तो जब ये घटना उन्होंने हरिकेश महाराज को जब बताया तो हरीशौरी प्रभु जी जानना चाहते थे कि क्या प्रभुपाद जी ने ये सही में उनको बोला है, तो प्रभुपाद जी से कंफर्म करना चाहते थे. So Harisari asked him about what Harikesh had told him, and then Prabhupada said, it's common knowledge. Everyone knew that. He just kind of dismissed it. He didn't say yes, didn't say no, and then he just kind of, his mood changed and just went away from it. तो जब वो पूछने के लिए गए प्रभुपाद जी के पास कि प्रभुपाद जी हरिकेश महाराज ने ऐसा हमें बताया, क्या ये सत्य है? तो प्रभुपाद जी बोले अरे ये तो सब चीज़ लोग जानते हैं, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है. तो एक प्रकार से वहाँ पे उन्होंने मूड चेंज करके उनको मतलब हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, ऐसा किए. So there's at the beginning of the in the introduction to the Bhakti Rasamrita Sindhu, actually at the time of initiation, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had told Srila Prabhupada that he should deeply study Bhakti Rasamrita Sindhu. तो प्रभुपाद जी की जब दीक्षा हो रही थी तो उनके जो गुरुदेव श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उनको बोल रहे थे कि भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है तुम्हें बहुत ही गहन अध्ययन करना चाहिए. So in the Mangalacharanam, which is the first 6 verses of the Bhakti Rasamrita Sindhu, this is to invoke auspiciousness. Under Ashubad, Srila Rupa Goswami describes how he's compiling this Bhakti Rasamrita Sindhu so that everyone will be happy. तो वहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु के जो पहले 6 इन्वोकेशन जो प्रार्थनाएं हैं उसमें देखते हैं कि कैसे वो लिख रहे कि जो प्रार्थनाएं होती है कि कैसे लोग के जीवन में एक ऑस्पिशियस लाता है. So Prabhupada, he puts it in the introduction to the Nectar Devotion, kind of paraphrases it and adds a little bit from the previous verse. But what he says is Rupa Goswami very humbly submits. This is a real key point, so I'm just reading it. That he's just trying to spread Krishna consciousness all over the world, although he humbly thinks himself unfit for this work. तो प्रभुपाद जी वहाँ पे अपने जो इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि कैसे Okay, what I'll do is I'll share it with you, okay?
तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, बहुत ही विनम्र भाव से बोलते हैं कि वो जो कृष्णा कॉन्शियस का जो प्रचार कर रहे हैं ये उसके लिए अयोग्य है। And then Prabhupada said that should be the attitude of all preachers of the Krishna consciousness movement, following in the footsteps of Srila Rupa Goswami. We should never think of ourselves as great preachers, but should always consider that we are simply instrumental to the previous acharyas, and simply by following in their footsteps, we may be able to do something for the benefit of suffering humanity. तो जितने लोग भी प्रचारक हैं उनको ऐसा विनम्र स्वभाव होना चाहिए कि उन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम प्रचार कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हम प्रचार करने के लिए बहुत ही अयोग्य हैं। तो यदि हम इस भाव में रहेंगे तब हम ऐसे जो बद्ध जीव हैं जो इस संसार में बहुत कष्ट पा रहे हैं उनके लिए हम कुछ कर पाएंगे। So that was always very impressive to the first devotees, how humble Prabhupada was, but how deeply committed he was and how strong he was in his determination. तो जैसे सभी जब लोग पहले पहले आते थे तो उनके लिए बहुत ही आकर्षक था कि कैसे प्रभुपाद जी इतने विनम्र है लेकिन इतने ज़्यादा गंभीर भाव में है और ये चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उनमें इतना ज्ञान है। I'm going to backtrack a little bit to this prediction. This is kind of, it's in line with the humility that Prabhupada writes about here that's required to be an effective preacher. Go ahead. तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक प्रभावशाली प्रचारक होने के लिए कैसे हमें विनम्र होना चाहिए। ये हम लोग पहले जो प्रेडिक्शंस या जो पूर्वानुमान लगाए गए थे, भविष्यवाणी की गई थी, वहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं। One thing that I left out about this Brahma Vaivarta Purana prediction, this mantra Upasaka would appear in 5,000 years and spread Krishna consciousness all over the world, and this chanting of the holy name would continue for 10,000 years. And that's the only thing Prabhupada revealed to us. तो जैसा हम लोग देखते हैं कि मैं हम कुछ भूल गया था, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में बता रहे थे कि ये जो मंत्र उपासक लोग जो आएंगे, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप करेंगे, जो 5000 पश्चात, तो ये जो आंदोलन है ये पूरे 10,000 वर्ष तक चलेगा, जो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें पता चला। And in the 1996, which was Srila Prabhupada's the centennial, Lokanath Swami wrote an introduction to the Vyasa Puja book, and in there he revealed the whole translation, about how this, but out of humility, Prabhupada didn't take credit for being the mantra Upasaka. Huh? Lokanath Swami, he was in charge of the centennial committee. तो ये सेंटेनियल जो महत्वपूर्ण ये समारोह हो रहा था, तो वहाँ पे लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने ये सब प्रत्येक शब्दों का उन्होंने एक एक शब्दों को बताया और उनका बाद सबको बताया कि ये किस प्रकार से प्रभुपाद जी की विनम्रता थी। So that amazing amount of humility that Prabhupada had, but also very, very, very deep compassion and love. The devotees, when they first would meet him, I heard story after story. At the first time, like devotees would meet Srila Prabhupada, their hearts just melted. They just felt his, incredible compassion and love for them. तो हम यहाँ जैसे देखते हैं प्रभुपाद जी की विनम्रता, और मैं बहुत सारे भक्तों से भी मिला हूँ। वो सारे भक्त लोग जब मुझे प्रभुपाद जी के विषय में बताते हैं कि जब वो पहली बार प्रभुपाद जी से मिले थे तो प्रभुपाद जी का जो उनके प्रति प्रेम और करुणा था उसकी कोई सीमा ही नहीं थी, और उस करुणा और सीमा को देखकर उनके हृदय जो है पूरी तरह पिघल गए। So by Krishna's divine plan, Prabhupada came to America just when the hippie movement was unfolding in a very big way. तो इस भगवान की एक बहुत बड़ा एक प्लान बोल सकते हैं कि उन्होंने प्रभुपाद जी को उस समय भेजा जब अमेरिका में पूरा हिप्पी आंदोलन चल रहा था। Most of the American youth, including me, were rebelling against the establishment. They didn't want to have any part of the Vietnam War, which they considered to be outrageously stupid, and they didn't want
they walked away from their education, they walked away from the jobs, and just they were looking for something better. And many of them were turning to the east, to India, for answers. तो जैसा हम लोग देखते हैं कि उस वक्त जो यह हिप्पी आंदोलन चल रहा था तो बहुत सारे लोग हिप्पी थे, मैं भी उसमें एक था। तो हिप्पी लोग थे कि वो जितने मतलब गवर्नमेंट से पूरे अपोजिट, उन्होंने जो भी प्लान बनाए थे उनको पसंद नहीं आ रहे थे। जैसे वियतनाम वार, उससे भी वो दूर चले जा रहे थे, अपने स्कूल कॉलेज सब चीज़ छोड़ दिए थे, अपने जो जॉब थे उसको भी छोड़ दिया, और बस ऐसे ही मतलब रहते थे। तो उन कुछ खोज रहे थे कि वास्तव सत्य में क्या है। तो इसी खोज में बहुत सारे लोग भारत की ओर भी आने लगे। It's actually quite amazing that Srila Prabhupada, in his Krishna consciousness and his saintliness, would go and pull into Krishna consciousness the lowest of the low, which is really what the hippie culture was all about. तो प्रभुपाद जी की असीम करुणा थी और कृपा थी कि ये जो हिप्पी लोग जो इतने निम्न थे, इतने नीचे गिरे हुए थे, उस अवस्था से भी उनको उठाकर ऊपर लेके आए। But the results were just phenomenal. Just like, probably his other Gaudiya Math members, if they had witnessed what went on at the Mantra Rock concert, they would have fainted. तो जैसा बोलते हैं कि ये जो मंत्र रॉक एक फेस्टिवल जब प्रभुपाद जी वहाँ करते थे, तो यदि गौड़िया मठ और दूसरे लोग यदि जान पाते कि प्रभुपाद जी ने क्या वहाँ पे किया है, यदि समझ पाते, देख पाते, तो वहीं पे वो बेहोश होकर गिर जाते। But Prabhupada was just so ecstatically enlivened and went forward with it, and as a result of the Mantra Rock concert, eventually, the devotees connected with George Harrison of the Beatles. तो प्रभुपाद जी का जो मंत्रा रॉक जो उन्होंने बनाया, मतलब कि ये जो चैंटिंग वाला, तो इससे जॉर्ज हैरिसन तक ये खबर पहुंची और वो भी इससे बहुत प्रभावित हुए। Mukunda Maharaj was instrumental in establishing the New York temple. Then he went to San Francisco, and then Prabhupada sent him with Malati and Shyamasundar. At that time, of course, Mukunda Maharaj was married to Janaki, and then Jamuna and Guru Das. So the three couples went to London and set London on fire with the Hare Krishna mantra. तो जैसा हम लोग देखते हैं कि मुकुंद महाराज उन्होंने न्यूयॉर्क टेम्पल की स्थापना की और सैन फ्रांसिस्को मंदिर की भी स्थापना की। तो प्रभुपाद जी तीन लोगों को, तीन जो दंपति थे उनको उन्होंने इंग्लैंड भेजा, जिसमें हम लोग जानते हैं कि मालती माता जी और श्याम सुंदर प्रभु और गुरुदास प्रभु एंड यमुना माता जी और मुकुंद प्रभु एंड जानकी माता जी थी। He's a pretty smart guy. I was supposed to speak phrase by phrase, but I went a little bit longer on that. So anyway, Prabhupada was very pleased. He sent Dayananda and Nandarani. They went to Los Angeles, started the Los Angeles temple, and there was something that was very pleasing to him. And he was like, when he went to, when he had his third heart attack in America, and he went to India. Devotees, they went to Montreal and started up there. They started in LA, and he just bathed them with love. So much appreciation. He just was so appreciative and loving to his disciples, and they became so motivated to work so hard as dancing white elephants to spread Krishna consciousness worldwide. तो जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत ही इन लोगों के जो जितने उन्होंने कर रहे थे उसको देखकर बहुत ही आनंदित थे और उन लोगों को बहुत उत्साह भी देते थे। जैसे हम लोग देखते हैं कि दयानंद प्रभु और नंद रानी माता जी, वो लोग भी लॉस एंजल्स मंदिर स्थापना की, और प्रभुपाद जी को जब ये तीसरा हार्ट अटैक आया अमेरिका में, तो वो लोग बहुत ही और प्रचार को व्यापक करने लगे, और प्रभुपाद जी को इससे बहुत आनंद आता था, और प्रभुपाद जी ये सब चीज़ें देखकर उनको और उत्साहित करते थे कि हाँ ठीक है, अच्छे से करने के लिए। There's one other
like pastime that I wanted to describe about a prediction, and or just an understanding. No, more of the understanding of Srila Prabhupada's deep devotional mood, and this came out in such a powerful way when he was staying at the Radha Damodar temple. तो अभी हम लोग एक प्रभुपाद जी की लीला के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि वो भक्ति में कितने गंभीर थे। ये हम लोग जो एक घटना है राधा दामोदर मंदिर में, ये उस समय की है, वो मैं बताना चाहता हूँ। There's a Prabhupada disciple, Mataji Mula Prakriti. She left her body a few years ago in Vrindavan, but she had went around and met with all these people, all these sadhus or others that knew Srila Prabhupada before he came to America. He interviewed them, and then she published a book. It's called Our Srila Prabhupada, A Friend to All. तो एक माता जी है प्रकृति माता जी जो वृंदावन में थी, तो कुछ पहले ही उन्होंने शरीर अपना छोड़ा, लेकिन वो शरीर छोड़ने से पहले वो वृंदावन में जितने बाबा जी साधु जितने लोग थे उन लोगों से मिली जिन्होंने प्रभुपाद को मतलब विदेश जाने से पहले उन्होंने देखा था। तो उन सभी लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लेने के पश्चात उन्होंने एक पुस्तक की संकलन किया। उस पुस्तक का नाम है What's that? Book name is Our Srila Prabhupada, A Friend to All. हमारे श्रीला प्रभुपाद सभी के मित्र। And you can even understand my American English. That's amazing in itself. Okay, you don't need to translate that. Okay, so she interviewed one sadhu, and at the time he was 79 years old, and he lived in a room right above the courtyard where Rupa Goswami's samadhi was. It overlooked it in an adjoining temple. तो एक साधु से उन्होंने जब इंटरव्यू लिया जो 79 वर्ष की अवस्था में, मतलब वो साधु थे उस वक्त, और वो वही राधा दामोदर मंदिर के उधर एक साइड में एक जो रूफटॉप में एक रूम था, तो वहीं पे वो रहा करते थे। And he was born at Radhakund. His name was Shripad Hridayananda Babaji Maharaj. श्रीपाद हृदयानंद बाबा जी महाराज जो राधा कुंड में उनका जन्म हुआ था, वो वहीं पे रहा करता थे, मतलब ये राधा दामोदर मंदिर में रहा करते थे उस वक्त। And he would be awoken in the middle of the night. There was this kind of like crying or really intense sound, and he couldn't understand what it was, like 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock. And then one night, it was a full moon, and again, this intense crying. And he went up on the roof and looked down into the courtyard, and he saw Prabhupada sweeping the ground with a small broom and crying, "Please, Rupa Goswami, empower me. Shri, please, Sanatana Goswami, empower me. Shri, please, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, please empower me to do this mission." तो वो जब अपने रूम में रहा करते थे तो देखते थे कि रात में कभी 12 बजे कभी 1 बजे बहुत रोने की आवाज़ आ रही है। तो अचानक उनका नींद टूट जाता। तो एक बार अपने रूम पे जब ऊपर से निकल के देखे कि कौन है व्यक्ति है जो रो रहे हैं, तो वो देख रहे थे कि हमारे श्रीला प्रभुपाद जी एक छोटी सी झाड़ू लेकर रूप गोस्वामी जी की समाधि को वहाँ पे साफ कर रहे हैं झाड़ू से, और बहुत ही क्रंदन कर रहे हैं और बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, मुझे कृपया मदद कीजिए कि मैं ये जो असंभव जो टास्क मिला है उसको मैं संभव कर पाऊँ। I mean, when Mula Prakriti Mataji started the interview with the sadhu, he actually started crying because he was so touched, by what had taken place between himself and Srila Prabhupada. तो माता जी जब ये इंटरव्यू लेने लगे तो साधु No, the sadhu was crying. तो साधु है कि जब वो ये बता रहे थे तो बताते बताते वो जो घटना उनको इतना उनके हृदय को टच कर रहा था और उन चीज़ों को देख पा रहे थे कि वो पूरे रोने लगे उस वक्त बताते बताते इस घटना को।
And, he was so moved when he discovered that this was actually coming from down there, and it was Srila Prabhupada that was making this unusual sound vibration, that he went and offered, "Can I do something to serve you?" तो इतने जब ये जो घटना देखने के पश्चात तो बहुत ही उनके हृदय में कुछ लगा कि हाँ बहुत टच हो गए कि, तो वो नीचे आए और प्रभुपाद जी को पूछे कि क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ. So he would wash Prabhupada's clothes, he would clean the room, he would, because Prabhupada wanted to focus on his translating the Bhagavatam, so this sadhu would sit on the veranda, and when people come to visit, no, he can't be disturbed now, he's busy translating. So he was kind of became Prabhupada's servant because he was so moved by the depth of his sadhana practices. तो हम लोग देखते कि ये जो साधु जी वहाँ थे, तो प्रभुपाद जी की इतनी जो भक्ति देखने के पश्चात उनका हृदय बहुत ही टच कर गया प्रभुपाद जी के इस आचरण को देखकर. और उन्होंने प्रभुपाद जी से जब पूछा तो प्रभुपाद जी उनको उनके कपड़े धोने और ऐसे छोटी छोटी सेवाएं उनको दिए ताकि वो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का जो अनुवाद कर पाएँ. और बहुत समय वो बरामदे में बैठा करते थे, और जब कोई लोग उनसे मिलने आया करते थे तो बोलते थे नहीं अभी नहीं जाना है, अभी वो भागवतम ट्रांसलेट कर रहे हैं. तो इस प्रकार से वो प्रभुपाद जी की थोड़े एक प्रकार से पर्सनल सर्वेंट भी हो गए थे. So Prabhupada, the Acharya, he teaches by his own example. Of course, there's the shastric knowledge and also the realizations. But it was just amazing how determined his disciples would observe this in many situations, how determined, how steadfast he was in executing the order of his spiritual master and also fulfilling the vision that Sri Chaitanya Mahaprabhu had and expressed it through Srila Rupa Goswami. तो हम लोग देखते हैं कि जैसे आचार्य बोलते हैं, आचार्य लोग अपने आचरण से सब चीज़ें सिखाते हैं. तो प्रभुपाद जी का ऐसा नहीं कि सिर्फ आचरण ही था, उनका शास्त्रीय ज्ञान भी था, उनकी भक्ति भी थी, और सबसे महत्वपूर्ण जो था कि वो बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि उनको जो ये आदेश प्राप्त हुआ है उसको वो कैसे पूर्ण करेंगे. तो इस चीज़ों को उन्होंने रूप गोस्वामी जी से ये रोते रोते अपने हृदय की बात को बताया. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिसे ये सब चीज़ें उन्होंने शक्ति मांग रहे थे कि हाँ हमें ये चीज़ें करना ही है. So I'm going to read a letter that Srila Prabhupada wrote to Sudama. तो मैं अभी एक पत्र पढ़ने जा रहा जो श्रीला प्रभुपाद जी ने सुदामा प्रभु को लिखा था. This was a 1972 letter, end of 72. Which is kind of amazing, how Krishna made all of these arrangements. As we know, for the first 100 years after after Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes ended, there was the Vishvash Vaishnava Sabha. So kind of like a real tight group of focused Vaishnavas. Okay, so he lost the chain of thought. Yeah, right? sorry. I changed the chain of thought in a way. That's why you lost it. Okay, forgive my improprieties. Okay, I'm gonna read this letter, but before I do, I'm gonna set the stage a little bit. Okay, तो मैं अभी जो ये पत्र पढ़ूंगा उससे पहले मैं एक भूमिका बांधना चाहता हूँ. Okay, so in the first 100 years, there's about I think it was about 20 years after Bhaktisiddhanta, or after Sri Chaitanya Mahaprabhu left his pastimes here, his followers established the Vishva Vaishnava Sabha, which is kind of a preliminary to ISKCON. तो ये 20 श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के 20 वर्ष जो हो गए उनके मतलब इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात तो विश्व वैष्णव सभा का उन्होंने उनके जो शिष्य लोग थे उन्होंने स्थापना किया. Yeah, it was like Vaishnavas coming together with the same mood, the same spirit to spread Krishna consciousness. तो उसमें ये था कि कैसे एक ही उद्देश्य होगा कि इस कृष्ण भावनामृत को कैसे करके आगे बढ़ाया जाए. But by Sri Chaitanya Mahaprabhu's plan, somehow or other,
Apasampadayas took over, and the whole Vishva Vaishnava Sabha just kind of fell apart. तो विश्व वैष्णव सभा में देखते हैं कि कैसे जो अपसंप्रदाय लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इसमें प्रवेश कर लिया और ये विश्व वैष्णव समाज का जो मूल सिद्धांत था वो पूरा टूट गया और ये पूरी तरह खत्म हो गया, एक प्रकार से बोल सकते हैं. It got to the point where, like when Srila Bhaktivinoda Thakur came to the planet, that a cultured man wouldn't take seriously the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने देखा कि यहाँ कैसे ये जो सभ्य व्यक्ति लोग होंगे वो ये वैष्णव सिद्धांत को नहीं लेंगे इस अपसंप्रदाय लोगों के कारण. So then Srila Bhaktivinoda Thakur, he was looking for a Chaitanya Charitamrita, and he finally found one in Orion. तो भक्ति विनोद ठाकुर जी चैतन्य चरितामृत को खोज रहे थे तो बहुत अंत में उन्हें ये चैतन्य चरितामृत प्राप्त हुआ. I think it took him many years to find. तो ऐसा बहुत समय लगा उनको ये चैतन्य चरितामृत प्राप्त करने के लिए. So he took it on himself to kind of turn that mess around. And he wrote many books, incredible schedule, just practically didn't sleep, but he still met with his family for an hour every day, so he kept a balance, and just incredible sadhana practices and incredible writing, and he just made available what Sri Chaitanya Mahaprabhu was actually doing. तो जो चैतन्य महाप्रभु का जो ये एक इच्छा था, जो मतलब ये विश्व वैष्णव समाज का, तो वो जो स्थापित करने के लिए वो बहुत सारी किताबें लिखे और बहुत सारे जो उनका जो शेड्यूल था बहुत ही टाइट था, लेकिन इसके पश्चात भी वो 1 घंटा अपने परिवार के सदस्यों के लिए निकालते थे ताकि ये जितनी जो किताबें हैं और जो मूल वैष्णव सिद्धांत है सभी लोगों तक वो उपलब्ध हो पाए. But then he realized that he wouldn't be able to really implement what he had uncovered in all of the books. He needed a ray of Vishnu to establish the Gaudiya Math. And so Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur manifested. तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो भी उनको ये संदेश रिवील हुआ उनके हृदय में, उन्होंने जो लिखा तो देख पा रहे थे कि जो मैं लिख तो दिया हूँ लेकिन इसको वास्तविक जमीनी सत्य या बोल सकते हैं जमीन पे उतारने उनके लिए संभव नहीं है. तो प्रार्थना करने लगे कि विष्णु की जो किरण है वो उन्हें प्राप्त हो. तो उसके पश्चात वो भगवान से जब प्रार्थना किए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस पर वहाँ पे अवतरित हुए उनके घर में उनके पुत्र के रूप में. There's one other prediction I left out. Bhaktivinoda Thakur, approximately 10 years, maybe 11 years before Srila Prabhupada appeared, he wrote in a Sajjana Toshini article that soon a personality will appear and he'll spread Krishna consciousness all over the world. तो श्रील प्रभुपाद जी के 11 वर्ष पहले जब उन्होंने सज्जन तोषणी जब लिख रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर, तो लिखे थे कि हाँ एक व्यक्ति आएंगे ऐसे सेनापति जो पूरे विश्व में ये पूरे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे. So there's no question who that personality is, who he was, right? तो हम में से प्रश्न नहीं है कि अरे ये कौन है, हम लोग जानते हैं वो कौन है. In the year of Prabhupada's birth, Srila Bhaktivinoda Thakur sent his book, the Life and Teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu, to different universities all over the world. तो चैतन्य महाप्रभु की जीवन और उनकी शिक्षाएं एक पुस्तक है. उनको श्रील प्रभुपाद जी के जन्म जिस वर्ष में हुआ उस वक्त भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सारी पुस्तकें बहुत सारे जो पुस्तकालय है विश्व में वहाँ उन्होंने भेजा. So Prabhupada, he wrote a letter. Who would know that I was from a different family, and but who would know that I would meet his son, and he would be my guru, and there was like a whole plan of the Lord. तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक लेटर में कि वो अलग परिवार से थे
वो कैसे मतलब हम उनके पुत्र से मिले, उनके शिष्य हुए, तो ये सब चीज़ें भगवान का ही एक बहुत बड़ा प्लान था। Okay, so now I'll read the letter to Sudama that was written in December 23, 72. When I was okay, go ahead. तो मैं अभी ये वो पत्र पढ़ूंगा जो 1972 में सुदामा प्रभु जी को लिखा गया था दिसंबर में। When I was alone in your New York, I was thinking, who will listen to me in this horrible, sinful place? तो जब न्यूयॉर्क में बैठे थे अकेले तो सोच रहे थे कि इस एकांत में मुझे कौन सुनेगा, ये तो बहुत ही विभत्स जगह है। Has anybody ever been to New York? तो यहाँ पे कोई है जो न्यूयॉर्क गए हैं अभी तक? So that was an accurate description. It's a horrible, sinful place, right? तो आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, ये जो प्रभुपाद जी लिखे हैं कि ये कैसे विभत्स जगह होगा और बहुत ही पापी वहाँ पे जगह होगा। By Krishna's divine arrangement, I joined ISKCON. The first temple I ever visited, it was July 7, 77. So 7/7/77, my lucky numbers. And I joined in the ISKCON New York temple, the 55th Street, 11-story building. And my life completely transformed as a result of that. तो मैं वहाँ न्यूयॉर्क मंदिर में ज्वाइन हुआ और 5वीं तला 5th फ्लोर पर। What's that? 11-story building. हाँ, 11वें तल्ले का वो बिल्डिंग था जहाँ पे प्रभु जी गए और वहाँ ज्वाइन हुए। तो वहाँ पे जो 777 का जो नंबर है ये इनके लिए बहुत ही लकी है और बोल सकते हैं महत्वपूर्ण है। And my first full day, which was the next day, I chanted 16 rounds and never stopped. तो ज्वाइन होने के अगले दिन ही वो पूरा 16 माला चालू कर दिए और उसके बाद से अभी तक नहीं रुके हैं। But that was a result of Srila Prabhupada's incredible arrangements. It was just so miraculous how I was pulled out of the darkest regions of Tamagun. तो ये सभी चीज़ें प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि मुझे कैसे उस पूरे तमोगुण के बोल सकते हैं खान से उन्होंने खींच कर निकाल के अपने पास लेके आ गए। Okay, so going on with the letter. All right, I shall stay a little longer. At least I can distribute a few of my books. That is something. तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन रहूंगा, अपनी पुस्तकों का वितरण करूंगा। But Krishna all along was preparing something I could not see, and he brought you to me one by one, sincere American boys and girls, to be trained up for doing the work of Lord Chaitanya Mahaprabhu. लेकिन मैं यह देख पा रहा था कि भगवान कृष्ण का एक अलग प्लान था, वो अपना एक प्लान तैयार कर रहे थे और बहुत सारे जो अमेरिकन लड़के और लड़कियां थी उन सभी को इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के लिए वो तैयार कर रहे थे। Now I can see that it is a miracle. Otherwise, your city of New York, one single old man with only a few books to sell for barely getting eatables. How he can survive? What to speak of introducing God consciousness movement for saving humankind? That is Krishna's miracle. Now I can see it. तो ये सभी मैं देख पा रहा था कि ये सभी चीज़ें भगवान श्री कृष्ण का ही चमत्कार था कि जहाँ पे मैं एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था और मेरे पास बस कुछ पैसे थे और मेरे पास खाने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं कैसे यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करूँगा और ये कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन, कृष्ण भावनामृत आंदोलन तैयार करना, ये तो बहुत ही सोच से भी परे है, लेकिन ये सब चीज़ें भगवान कृष्ण की कृपा से ही हुआ जो आप आज हम सभी लोग देख पा रहे हैं। I have some more points to make. Is it possible to hand around the microphone and ask for questions? Yeah, we can do that. तो मेरे पास बहुत सारे चीज़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्या ये संभव है मैं माइक दूसरे को दूँ और दूसरे लोग कुछ प्रश्न भी करें। So if anybody has any questions or comments, or if you want to throw a few rotten tomatoes at me, I can also, I'm a good athlete, so I could probably catch them before it smashes on my head. आप लोग प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो
So there's a question back there, okay, on the left-hand side. He's got one, okay. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for this wonderful class. Prabhuji, if in a small capacity, if we want to be an empowered preacher, what should we strive for? What should we try to do? Okay, number one. Translate. Okay, translate. तो हमारा एक प्रश्न आया है कि एक अच्छा प्रचारक बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए. Okay, there is a famous shloka, which probably many of you know. It's Madhya Lila. This is Sanatan Shiksha, chapter 22, verse 113. Smartavya sadatam Vishnur Vishmartavyo najatuchit sarve vidhi nasheda shur etayor eva kinkara. One should always remember Krishna, and one should never forget him. All the rules and regulations of the scriptures are simply servants of these two principles. तो चैतन्य लीला में चैतन्य चेतामृत 22वें अध्याय 131वां श्लोक जो है उसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण को हमेशा याद करना और उनको कभी नहीं भूलना. So then in the purport, Prabhupada says, if we want to remember Krishna, we need to chant Hare Krishna. Then a few sentences later, he says, of all the instructions of the spiritual master, the chanting of 16 rounds is the most essential. तो वहाँ बताते हैं कि हमें भगवान कृष्ण को याद करने के लिए हमेशा जप करना चाहिए. फिर कुछ दिनों पश्चात वो एक लेटर लिखते हैं, उसमें बताते हैं कि जो गुरुदेव की जो बहुत सारी जो हमारे निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें से 16 माला का जाप करना वो सबसे महत्वपूर्ण है. I'll tell you a remarkable story in this regard in my own devotional service. I was a fairly new devotee. I had joined, it was about a year and a half after I joined, and I was on a traveling Sankirtan party. तो मैं अपने जीवन का एक घटना बताता हूँ कि जब मैं नया भक्त था तो लगभग 1.5 साल के आसपास हुए थे और मैं संकीर्तन में जब गया था. There we had four. I was a saffron-clad brahmachari. We had 4 vans that were all saffron colored, and we had one motorhome. Now, a motorhome isn't so common in India, but it's very common in America, where it's a house on wheels, and you can drive it down the highway. And it's got a kitchen, it's got a bathroom, got a bedroom, living room. So that was, it was I think about 16 brahmacharis and one leader. तो उस वक्त हमारे 4 बस हुआ करते थे, सभी पूरे केसरिया रंग में रंगे हुए थे और मैं उस वक्त ब्रह्मचारी था, लाल कपड़े में था. तो बोलते उस वक्त मूविंग व्हील था जिसमें मतलब किचन भी है, बाथरूम भी है, सब चीज़ें था. तो हम लोग उस वक्त 16 लोग थे जो ग्रंथों का प्रचार के लिए इस वैन में थे. And this was a traveling Sankirtan party out of the New York City temple. तो हम लोग ये न्यूयॉर्क सिटी से बाहर गए थे वो प्रचार करने के लिए. And at that time the temple president was Romapad Das Brahmachari. तो उस वक्त जो मंदिर के अध्यक्ष थे वो रोमपाद दास ब्रह्मचारी थे. Now of course he's a sannyasi. अभी वो सन्यासी हैं. So he came out to join the party, and what we would do in those days, I just spoke with Sravas Prabhu. This is a real interesting pastime. Sravas is the longest tenured temple president in ISKCON's history. तो सुहास प्रभु से मैं कुछ दिन पहले ही बात किया. तो सुहास प्रभु जो इस्कॉन के ऐसे अध्यक्ष है जो सबसे लंबे समय तक किसी मंदिर के अध्यक्ष रहे हैं. He was temple president in the Denver temple. I think he took over there about like 1983, 84, like that. 1983-84 में वो डेनवर मंदिर को मतलब अध्यक्ष बन गए थे उस वक्त. And then he became the temple president in Los Angeles in 87. तो 87 में वो लॉस एंजल्स मंदिर के अध्यक्ष बने. And he became the North American BBT trustee shortly after that. तो नॉर्थ अमेरिका के बीबीटी के अध्यक्ष भी बने कुछ समय पश्चात ही. And he's still doing those services. So one time
and it was 1975, all the book distributors in North America converged on the Atlanta temple to get Srila Prabhupada's darshan. And their expectation was to get the magic formula to increase book distribution. Huh? Atlanta temple. तो उस वक्त जितने जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे तो वहाँ अटलांटा मंदिर में वो सभी लोग एकत्रित हुए थे और सभी लोग प्रभुपाद जी का वहाँ पे दर्शन और सानिध्य चाह रहे थे। तो उनको पता था कि एक मैजिक फार्मूला है, यदि प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करना है तो क्या करना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथों का वितरण करना है। So they were all waiting expectantly for this. Prabhupada started talking, and then he asked for questions, and Srivas Prabhu raised his hand and said, Srila Prabhupada, how can we increase our desire to distribute your books? तो वहाँ पे सभी जब भक्त लोग मिले थे तो एक बार प्रश्न पूछने का जब अवसर आया तो सुहास प्रभु अपना हाथ खड़ा करके बोलने लगे कि प्रभुपाद जी कैसे हम लोग आपके इस ग्रंथों का और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर पाएंगे, वितरण कर पाएंगे। So Srila Prabhupada went into a prolonged meditative silence and he looked up at the ceiling. And then he finally said, if you really want to increase book distribution, if you really want to increase book distribution, if you really want to increase book distribution, you will chant all of your rounds without stopping. तो प्रभुपाद जी बहुत एक गंभीर मुद्रा में चले गए और शांत हो गए कुछ देर तक और फिर उसके बाद ऊपर की ओर देखने लगे और देखने के पश्चात बोलने लगे, यदि आप हमारे ग्रंथों का वितरण और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं तो ग्रंथ वितरण से पहले एक ही बार में पूरा 16 माला कंप्लीट करना पड़ेगा। So when I joined the movement in 77, 2 years later, all of the Sankirtan devotees, all the brahmacharis had to be up at 2 a.m. तो जब मैं ये 75 के बाद जब 77 में ज्वाइन हुआ था तो वहाँ जितने जो भक्त लोग थे, संकीर्तन के भक्त या ब्रह्मचारी बोल सकते उस वक्त, तो सभी लोग 2 बजे उठ जाया करते थे सुबह। Now, as you probably know, New York is in the snow belt, so it gets really cold in the winter. And it actually would cost, if they fully heated it in a normal temperature, it would have cost the temple $45,000 to heat it every month. $45,000. तो हम लोग जैसे जानते हैं कि न्यूयॉर्क जो वहाँ जगह है वो बहुत एक प्रकार से ठंडा जगह है, वहाँ बहुत बर्फ वगैरह पड़ता है, तो 45,000 जो डॉलर उस वक्त लगते थे सिर्फ वो जो पानी को गर्म करना या मंदिर को गर्म रखने के लिए। इस प्रकार So guess what? They didn't heat it. They only heated 2 places, the temple room and the restaurant. तो आप जानते हैं कि वहाँ पर उन्होंने सिर्फ 2 ही जगह को गर्म किया पैसा बचाने के लिए। कौन सा जगह था? मंदिर का रूम और जो रेस्टोरेंट था उसको। There used to be ice on the wall in the brahmachari bathroom, you know, from just the moisture coming off from the showers and whatever. तो वहाँ जो ब्रह्मचारी आश्रम था और वहाँ जो बाथरूम थे वो सब के रूम के बाहर में पूरा बर्फ जमा रहता था, क्योंकि वो स्नान करते थे या जो हवा निकलती थी वो सभी बर्फ के रूप में तब्दील हो जाया करती थी। So I used to get up at 1:45 to beat the traffic jam at the shower. तो मैं 1:45 में उठ जाता था ताकि मैं ऐसे बाथरूम में जो ट्रैफिक लगता था या जो जाम हो जाता था उसको मैं अवॉइड कर सकूं। I assumed that that this came, you know, this 2 o'clock get up time came from that discussion with Srila Prabhupada. So this morning at Guru Puja, I asked Srivas, is that your opinion? And he said, I don't know about anybody else, but that's when I started doing it. तो आज जब मैं गुरु पूजा में सुहास प्रभु से पूछा कि अरे ये 2 बजे का जो समय था ये क्या तुमने चालू किया था, तुम्हारे दिमाग था? तो बोले मुझे पता नहीं, बस चालू हो गया ऐसे ही। So I've made this the highest priority in my life, you know, just based upon. Oh, I forgot. Now let me tell you the story about Ramapad Swami. Okay, this is a key one. How it transformed my devotional life. So he came out to be with our party, our traveling Sankirtan party, and we would have our morning program in the motorhome. There were all the
temple deity photos. So we have Mongol Artik, devotees would be dancing up and down, the motorhome would be rocking in ecstasy. You can imagine 16 devotees jumping as high as they possibly can. What that does to the suspension system. तो आप लोग जैसे समझ सकते हैं कि जब रोमपाद महाराज जी जब हमारे वैन में ज्वाइन हुए तो हम लोग उस वक्त का जो मंगल आरती हुआ करता था, तो उस गाड़ी के जो डैशबोर्ड है उसमें जो मतलब एक प्रकार का अल्टर था, तो उसको देख के हम लोग की मंगल आरती हुआ करती थी और हम लोग उसी वैन में बहुत नाचा करते थे, कूदा करते थे। और आप लोग समझ सकते हैं कि उसका जो सस्पेंशन सिस्टम या जो स्प्रिंग जो रहता था उसकी क्या अवस्था हुआ करती होगी। Then we'd all chant japa together, and then we'd have Guru Puja and then Bhagavatam class, normal schedule. तो हमारे उसी वैन में ही जपा होता था, गुरु पूजा होता था, भागवतम क्लास होता था। So Maharaj gave the class, and he made a point. I don't remember which verse it was, but it was from the second chapter of the first canto, potent chapter. And he was describing how he noticed that some of the devotees were not chanting very good rounds. Some of them were chanting dive bomber japa, Hare Krishna, falling asleep. Others were chanting radar japa, looking at the cook, cooking breakfast, and obviously not paying attention, and it went on like that. So I realized that my japa was not very good. He elaborated on it, made some really good points. In those days, on our traveling Sankirtan parties, and I did traveling Sankirtan for the first 14 years, we used to have each devotee would be given 2 4-liter bottles. We call them gallons in America. Okay, now one gallon. Did you want to translate yes. a little bit? तो उस वक्त रोमपाद महाराज जी क्लास दिए, तो क्लास में वो सेकेंड कैंटो के फर्स्ट चैप्टर से कुछ वो जप के विषय में बता रहे थे। तो फर्स्ट कैंटो सेकेंड चैप्टर, यस सॉरी, तो फर्स्ट कैंटो के सेकेंड चैप्टर से बता रहे थे जपा के विषय में। तो बताते बताते वो बताने लगे बहुत सारे जो भक्त थे उस वक्त अलग अलग तरीके के जपा कर रहे थे। तो एक था डाइव बॉम्ब जपा ऐसे गिरने वाला, एक था रडार जपा ऐसे ऐसे करने वाला। तो इस प्रकार के बहुत सारे जप हो रहे थे। तो मैं भी अपने जप को सुधारने का प्रयास कर रहा था उस वक्त। So what we would do, we'd have 2-gallon jugs, 2 4-liter bottles, and one was for we'd be in a remote area, like sometimes behind a big supermarket or something like that, where the police wouldn't find us. And we would, use one bottle for soaping up and one bottle for rinsing off. Even in the middle of winter, we would do that. तो हम लोग उस वक्त 1 गैलन टाइप का मिला हुआ था, उसमें पानी रहा करता था। तो एक पानी हम लोग डालते थे, जैसे हम लोग को जहाँ समय मतलब जगह मिलता थोड़ा पीछे जाकर उधर पहले एक पानी डालकर पूरे शरीर में साबुन वगैरह लगाते थे, फिर उस दूसरे से पूरे अपने शरीर को धो लेते थे। तो ये सब चीज़ें हम लोग ठंडे के दिनों में भी किया करते थे, स्नान करना। So in those days, the magic formula for chanting good rounds was to chant louder than the mind. तो उस वक्त मैजिक जो एक मंत्र था बोल सकते हैं कि जपा करने का, कि आपके मन से ज़्यादा जोर से आपको ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। So I was very determined to chant the best rounds I'd ever chanted in my entire life. तो मैं बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ था कि मैं बहुत अच्छा जप करूंगा जो भी मैं अपने जीवन में किया हूं अभी तक का। And probably people could hear me from like maybe 2 or 3 kilometers away. तो मैं ऐसा जप कर रहा था कि 2-3 किलोमीटर दूर से भी लोग मुझे सुन पा रहे थे कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा। Pretty loud mind, तो मैं अपने माइंड से भी ज्यादा जोर से जप कर रहा था। But anyway, I really gave it everything I could, and it was amazing. When I got out on book distribution that day, every single person that I met was like the best person I would meet in 2 or 3 days. Every single person, and I distributed 3 times the number of books, 3 times the amount of Lakshmi. Woo! It blew my mind. तो मैं उस वक्त जो ऐसा कर रहा था तो बहुत अच्छा जप किया, और इसका प्रभाव मैं देख पा रहा था कि जब लोगों से मिला तो वो लोग बहुत ही बेस्ट, मतलब एक बहुत उत्तम व्यक्ति लोग थे। और लोग से जब मैं मिला तो 3 दिन के अंदर में ही मैं बहुत
पुस्तकों का वितरण किया और लगभग 3 गुना से ज़्यादा मैंने कर दिया और लक्ष्मी भी 3 गुना से ज़्यादा आ गया उस वक्त. So obviously, the next day I did the same. I tried to do the same thing. You know, it just like made a huge difference in my capability as a book distributor. It made a huge difference, you know, really focusing, putting the highest priority on my japa. You know, I just got such better results. It was very much, there was a direct correlation between the quality of my rounds and the number of books that Krishna would empower me to distribute. तो मैं अपने अगले दिन भी इस चीज़ों को अपने जीवन में उतारने लगा और अपने जपा को और सुधारने लगा, क्योंकि मैं देख पा रहा था कि जितना अच्छा मैं जपा कर पा रहा हूँ उतनी अच्छी मेरी जो पुस्तकों के वितरण है और अच्छे होते जा रहे हैं. Okay, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. So one other point before I get kicked out of here, in terms of empowerment. In 1989, I attended the Vrindavan Institute for Higher Education for the first time. At that time, I had been asked by the BBT to go to New York because there were 30 new devotees to train up on book distribution. But before going, I went and took these courses at the VIHE. So, I just lost it. Did you lose the train of thought too? No, okay. So in 1989, I was asked by the North American BBT to go to New York and train up 30 new devotees in book distribution. 1989 में मुझे अमेरिका भेजा गया कि 30 लोगों को वहाँ पे पुस्तक वितरण के विषय में उनको प्रशिक्षण देने के लिए. But before starting that service, because I just finished a Christmas marathon in the Atlanta temple, I went to Vrindavan to study in the VIHE. तो उससे पहले मैं अटलांटा में अपना वो जो पुस्तक वितरण था वो उसको किया और फिर वृंदावन VIHE में आकर मैं पुस्तकों को पढ़ा. And it was quite a lineup of teachers. We had Burijan Prabhu was teaching a Bhagavad Gita overview. Tamal Krishna Maharaj was teaching Brahma Samhita. Giriraj Swami was teaching Nectar of Devotion. Let's see, there was. तो वहाँ पे हम देख पा रहे थे कि बुरीजन प्रभु भगवत गीता पढ़ा रहे थे. तमाल कृष्ण महाराज, ब्रह्म संहिता, and one more was there. Burijan, Giriraj Maharaj overview, and anyway, it was Giriraj Swami. गिरिराज महाराज भी थे उस वक्त पढ़ा रहे थे. There was one other teacher. I'm having a senior moment. I can't remember, but it was really powerful. So got up at 2, ate once a day, studied all the time, went to all these classes, and when I got back to New York, the way I would be a Sankirtan leader is I would set this standard. You know, I would distribute a lot of books, more books than the others on my party. तो मैं यहाँ पे 2 बजे उठ जाया करता था, पहले ही जपा कर लिया करता था और दिन में एक बार प्रसाद लिया करता था और पूरे समय ग्रंथों का अध्ययन ही किया करता था. फिर मैं जब वहाँ गया तो एक स्टैंडर्ड सेट किया कि हाँ कैसे आपको ग्रंथों का वितरण करना है, क्योंकि ग्रंथों के वितरण में सफलता आएगी जब हमारी ये साधना अच्छी रहेगी. So what amazed me when I actually got out on book distribution, my results increased about 30-40% as a result of that studying. तो मैं देखा कि ये जो ग्रंथों का मैं अध्ययन किया और मेरी जो साधना अच्छी थी तो मेरे ग्रंथों का वितरण 30 से 40% और बढ़ गया. And you know, my experience in Vrindavan, I'd been going to Vrindavan since 81, but the Dham just came alive in a powerful way for me. It's just so amazing. तो मैं जब देखा कि जब मैं 81 से जब वृंदावन जाया करता था, लेकिन ये जब ग्रंथों का जब अध्ययन भी जब उसमें जुड़ गया तो मैं देखा कि एक बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन हुआ. So Panchanga Bhakti, you know, we got, you know, we just focus on, you know, in the last year and a half, I've been starting to do deity worship. And whoo, boy, it's incredible, you know, how the depth of my relationship with Krishna has increased worshiping my Gauranitai deities. It's a big part of my life now. तो पंचांग भक्ति में जैसे देखते हैं कि श्री विग्रह की जो अर्चन करना है तो उसमें देखता हूँ कि अभी मेरे जो भगवान के जो विग्रहों की सेवा है उनके प्रति जो मेरा लगाव है कितना ज़्यादा बढ़ गया है जो मेरी गौर निताय के विग्रह है उसके प्रति. Now I'm not a sales representative of Mahatma Prabhu, but I have distributed 5,000
in the last 3 years of his book, Japa Affirmations. And I found that by reading one meditation before I start my japa every day, that my rounds get better and better and better, the best that they've ever been in 46 and a half years, and they keep getting better. And that's the experience many, many devotees have had with this book. तो मैं महात्मा प्रभु जी का एक किताब है जिसका नाम है जपा अफर्मेशन। तो मैं यहाँ महात्मा प्रभु जी का कोई एजेंट नहीं हूँ, बट मैं जितने दिन भी देखा हूँ, पूरे जो 46 वर्षों का जो आध्यात्मिक सफ़र है, उसमें मैं देखा हूँ कि जब मैं ये पढ़ता हूँ एक जो कोट है प्रतिदिन, तो मेरा जप जो है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और दूसरे भक्तों ने भी ऐसा ही मंतव्य बताया है। So I don't have any with me now, but you know, it's a fertile field. You know, I could probably distribute over 100 here right now. I wasn't thinking about doing that. तो मैं ऐसे तो 5000 से ज़्यादा वितरण कर चुका हूँ, और मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि हाँ, जब आप देखेंगे कि मैं देता रहता हूँ भक्तों को ये पुस्तक। Anyway, the main focus, but that book is kind of the cream of 18 years of japa retreats, so it's very powerful. तो वो पुस्तक जो है 18 वर्षों के जो जपा का सार है उसको बोल सकते हैं। With devotees like Giriraj Swami, Indudumna Swami, Sachinandana Swami, Borijan. तो गिरिराज महाराज, इंदु महाराज, सच्चिदानंद महाराज ऐसे सब लोग का उनमें उनका निचोड़ है उसमें जप के विषय में। There's an ecstatic brahmachari back here who had his hand up earlier, right here. तो यहाँ पे एक बहुत उत्साही ब्रह्मचारी है जिनका हाथ उन्होंने उठाया था। Prabhu, did you have a question? प्रभु जी क्या आपका प्रश्न है? There's another, okay. Hare Krishna Prabhu, thank you for this nice class. Actually, I had heard your class similarly on Srila Prabhupada's empowerment and when he went to America for preaching. And there were many more points that you had told, and I was missing those points in today's presentation. One of the points was that the church had passed a resolution that Christianity is not the only way for reaching God. And there are many more points. Can you please tell those points in very quick, succinctly, because we don't have much time also. तो प्रभु जी मैंने आपका पहले भी प्रवचन सुना है, आपके बहुत सारे प्रवचन थे, तो उसमें जो मैं पहले सुना था उसमें से कुछ बातें जो है आज के क्लास में आपने बताया नहीं, लेकिन मैं सोचा कि बहुत पावरफुल है, जिसमें एक था कि चर्च मिशन के लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि ऐसा नहीं कि चर्च के द्वारा, इसके अलावा भी और बहुत सारे पद्धतियों के द्वारा भी भगवान को पाया जा सकता है। तो क्या आप उसके विषय में थोड़ा संक्षिप्त बताएंगे हमें? That was another dancing white elephant that you heard him give class. That was Sureshwar Prabhu. I know, you know, we're very close friends. I know basically what you're after, and you know that the. आपने वो दूसरे वाइट एलिफेंट जो एक सफ़ेद हाथी है, वो उनका नाम है सुरेश्वर प्रभु, उनसे सुना है ये क्लास, और मैं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या चीज़ें चाहते हैं, तो मैं थोड़ा बोलता हूँ। So, you know, basically, one thing is that the U.S. government relaxed their immigration regulations for people coming from India that had been really strict after the World War II because Japanese has teamed up, you know, with the Germans, and you know, anybody that had some kind of Asian look to it, they might be you know, trouble for America. So that's one thing. तो द्वितीय वर्ल्ड के बाद जो बहुत सारे जो जापानीज या जो एजेंट टाइप लोग लग रहे थे, तो उनके लिए थोड़े एक प्रकार से सख्त हो रहे थे, लेकिन बहुत सारे जो इंडियन लोग भी वहाँ जा रहे थे, तो इमिग्रेशन में थोड़ी छूट दी गई थी उस वक्त। And then the Catholic Church, they had this Vatican Council, and they recognized that there were other valid religious traditions besides Catholicism. Catholic. They passed that resolution. Okay. So open the door. Yeah. So Catholic जो उस वक्त जो चर्च थे उस वक्त उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और एक प्रकार से बोल सकते हैं कि नया द्वार खोला, क्योंकि वो लोग भी इस चीज़ों को समझ पा रहे थे कि हाँ, दूसरे भी पथ है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं. So in other words, if you were to read Bhagavad Gita and you were a Catholic, you're going to hell. तो जैसे
कैथोलिक से जो हम पहले बताते थे कि यदि आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप तो नरक जाएंगे, ये रेजोल्यूशन से पहले की घटना है, मतलब वो ऐसा बोला करते थे। So let's see. But I think, you know, the counterculture that was looking to the East for enlightenment, you know, like Janmastami's My Journey Home, you know, that was all about that. You know, all the hippies were thinking along those lines. You know, I went on a Zen macrobiotic diet at one point, and then, you तो know, हम लोग देखते हैं कि उस वक्त की जो युवा थी उनका भी एक झुकाव था ये पूर्वी बोल सकते भारत की ओर इस स्पिरिचुअलिटी को पाने का, तो इसलिए इस प्रकार से थोड़े चेंजेस भी आ रहे थे उस समय। और जैसे हम लोग देखते हैं कि राधानाथ महाराज जी का जो जर्नी होम है, जो किताब है, उसमें भी उन्होंने इस विषय के विषय में थोड़ा बताया है। I actually started praying to God starting about a year before I joined, please direct me to my guru. तो मैं भक्त होने से पहले 1 साल पहले प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मुझे मेरे गुरुदेव से मुझे मिलाइए। And I won't tell, there was like 6 weeks of amazing miracles that brought me to the movement. That's why the very first day I visited a temple, that was it, I joined. And if I tell that story, Anupam Srivas will get really mad at me for going past the timeline. तो 6 सप्ताह का ऐसा समय था कि मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी कि मैं जैसे ही जब कृष्णा कॉन्शियस में आया तो मैं बहुत बन गया, लेकिन यदि अभी उसको पूरे बताऊंगा तो अनुपम प्रभु जी थोड़े नाराज हो जाएंगे। अनुपम श्रीवास प्रभु। Oh, speaking of Anupam Srivas Prabhu, I want to just offer my like deep respect for the hard work he's done in putting the Sravan Utsav together. A lot of work. And he's tireless about it. That means Krishna is deep within his heart, inspiring him. तो मैं अनुपम श्रीवास प्रभु जी के विषय में बोलूँगा कि उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया है इस श्रवण उत्सव को सेटअप करने में, हर एक चीज़ों का, और अब देख भी सकते हैं कि वो कितना अथक प्रयास कर रहे हैं इसको सफल बनाने के लिए। Yeah, I kept trying to get out of it, and out of speaking, and he kept twisting my arm, and I had no choice but to surrender. तो मैं प्रयास कर रहा था कि कैसे नहीं लूँ इस सेवा को, लेकिन वो मेरे हमेशा पास आ जाता और मुझे बोलता कि हाँ प्रभु जी थोड़ा इस सेवा को ले लीजिए, और मैं इस चीज़ों से दूर नहीं हो पाया और मैं ये सेवा कर रहा हूँ। Okay, Prabhu, Brahmachari? No, I started late, so we're going to go a little bit later. I got permission. तो मैं थोड़ा लेट चालू किया था, तो मुझे थोड़ा परमिशन प्राप्त हो गया है थोड़ा If anyone's starving to death, you can go now. Okay. तो यदि किसी को लेट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। So thank you, Prabhu, for the class. My English is not very well. We are from Brazil, and so he will speak. He made my question, but I don't know it's time. तो यहाँ मेरा एक मित्र है, वो ब्राजील से है, उसका एक प्रश्न है। Hare Krishna Prabhu, thank you again for the association and the wonderful class. So his question is, what is your vision to continue this impossible mission in the future? तो आपका क्या विजन है इस इम्पॉसिबल टास्क को आगे और ले जाने के लिए? In the whole world. That's a very, very good question. पूरे विश्व में ये करने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। It's not just my vision, but it's Srila Prabhupada's vision. तो ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी का विजन है। Out of his humility and his service to Sri Chaitanya Mahaprabhu and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Rupa Goswami, he accepted the role of the founder acharya, as the founder acharya of the International Society for Krishna Consciousness. तो उनकी इतनी विनम्रता है कि चैतन्य महाप्रभु जी के जो ये उद्देश्य है, शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो उद्देश्य है और रूप गोस्वामी, इन सभी लोग का जो उद्देश्य है, उन सभी को पूर्ण करने के लिए उन्होंने इस्कॉन की प्रतिष्ठा आचार्य होने का एक दायित्व निभाया। So at the big, when there was my bio was being presented, I don't think anyone was paying attention, but one point that now my life is dedicated to helping devotees establish deep within their hearts a relationship with Srila Prabhupada as a foundational Shiksha Guru. That does not mean
disregarding their Diksha Guru. It actually enhances that relationship. You know, that you look at the fourth shloka. I just ran out of battery on my brain here, so I'm sorry. He has to translate. Okay, better translate, Baba. तो मैं यहाँ जैसे देख रहा हूँ कि अभी जो मेरा एक बहुत सारा जो एक महत्वपूर्ण कार्य है उसमें कि भक्तों का श्रील प्रभुपाद जी के साथ कैसे और ज़्यादा घनिष्ठ संबंध बनाया जाए। तो मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके गुरु के साथ आपकी जो संबंध है कम हो जाएगा, बल्कि यदि आप अपना जो संबंध श्रील प्रभुपाद से और घनिष्ठ करेंगे तो आपके गुरु के साथ भी आपका संबंध और ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे भी एक श्लोक था जो चतुर्थ श्लोक था, मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ, मेरी बैटरी खत्म हो गई। The fourth principle of devotional service listed by Rupa Goswami is sadhu vartmanu vartmana. Okay, to follow in the footsteps of the previous acharyas under the direction of the guru. तो उसमें एक बताया गया है कि अपने गुरुदेव का जो निर्देशों का पालन करना है वो पूर्ववर्ती आचार्यों का कैसे उन्होंने बताया है उसी आधार पे वो बता रहे हैं कि कैसे आप उसको अपने जीवन में पालन करेंगे। I'll tell you a little story that took place after the most recent Calcutta Rath Yatra. तो कलकत्ता रथ यात्रा के पश्चात एक घटना घटी, उसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ। Atul Krishna Prabhu and myself. Atul Krishna is fluent in English and Bengali. He's from Australia. We were partners in launching the Mayapur Institute. He was in charge of training the teachers, course material, and I was behind the scenes trying to pull all the strings as a director. तो मैं अतुल कृष्ण प्रभु से मिला, वो जैसे आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया से हैं, वो इंग्लिश और बंगाली दोनों ही जानते हैं। तो हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे थे और वो ये पूरे मायापुर इंस्टीट्यूट की उन्होंने एक प्रकार से मुझे मदद की वो कोर्स मटेरियल तैयार करने में और बहुत सारे जो टीचर्स का शेड्यूल या जो चीज़ें था उसको बनाने में। So we set the meeting through a secretary under the plea that we're developing 2 courses that we want to offer on Srila Prabhupada. Introduction to Srila Prabhupada and Srila Prabhupada, our founder Acharya. तो हम लोगों ने 2 कोर्सों की नींव रखी जिसमें था एक जो श्रील प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य और श्रील प्रभुपाद introduction to Srila Prabhupada and Srila Prabhupada, our founder Acharya. तो श्रील प्रभुपाद जी का इंट्रोडक्शन और श्रील प्रभुपाद जो फाउंडर आचार्य है इस विषय में। I started the conversation in a very unique way, and I said, Maharaj, I'm sure you vividly remember the catastrophic and disastrous circumstances our movement faced in the first 19 years after Srila Prabhupada's departure. Jayapataka Singh. So, मैं जयपताका महाराज जी से मिला और मैं बताया कि श्रील प्रभुपाद जी के जाने के 19 वर्ष तक लगभग बहुत ही एक कठिन जीवन था इस्कॉन में और बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई। And he confirmed that. And then I said, but devotees like your good self, senior gurus, Bhakti True Swami, Gopal Krishna Maharaj, and Dudumna Swami, Shivaram Swami, Naranjana Swami, so many devotees, senior gurus, kind of glued our movement together so it could go on in a reasonably stable way. तो हम लोग जैसे बहुत सारे सीनियर भक्त जैसे गोपाल कृष्ण महाराज, भक्ति चारू महाराज, निरंजन महाराज, शिवराम महाराज और बहुत सारे महाराज जो सीनियर भक्त हैं, जो दीक्षा गुरु भी हैं, सभी लोग जो मिल के एक साथ जब रहेंगे तब क्या होगा, ये जो आंदोलन है और अच्छे से और आगे जैसे चल रहा है और चलते ही रहेगा। But what will happen to our movement if devotees don't have deeply established within their hearts a relationship with Srila Prabhupada as the preeminent Shiksha Guru for the next 10,000 years? तो क्या होगा यदि भक्त लोग अपना जो संबंध है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो प्रतिष्ठाचार का संबंध है यदि वो स्थापन नहीं कर पाएंगे तो। I said it may even, and then all of you senior gurus leave, it may even be worse than it was after Srila Prabhupada left. तो
ऐसा हो सकता है कि यदि अभी आप लोग हैं, लेकिन यदि आप लोग जब चले जाएंगे तो हमारी अवस्था वो जो प्रभुपाद जी के जाने के पश्चात जो हुई थी उससे भी ज़्यादा और ख़राब हो सकती है. He completely agreed, and he said, if we don't do something now, it'll be very difficult to do after we leave. तो उन्होंने बोला कि हाँ हमें अभी ही करना चाहिए, क्योंकि हम लोग चले जाएंगे तो उसके पश्चात करना तो और कठिन हो जाएगा. So, Prabhupada made a big point about his role as a founder acharya, because he saw what happened to the Gaudiya Math when there was disrespect of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's position. Within months after his departure, disobedience to the max. तो हम लोग देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी इस चीज़ों को समझ पाए थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जाने के पश्चात लोगों का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पे उतना ज़्यादा जो श्रद्धा नहीं था, वो सभी लोग उनके आदेशों का तिरस्कार कर रहे थे और इसी प्रकार सारे मठ एक प्रकार से अलग हो गए थे. तो वो चाहते थे कि उनकी जो पोजीशन जो फाउंडर आचार्य की है वो सब लोग समझ पाए और उस आदेश या श्रद्धा पूर्वक रह पाए. So, this is a very deep part of our heritage, a deep part of our philosophy. That there's so much support for it. We're not Ritviks. My going deeper into my relationship with Srila Prabhupada, based upon all the studying I've been doing, the research, and the effort to get this up and running, as deep. A lot of people think I'm a Prabhupada disciple, but I joined 7/7/77. And Prabhupada was coming to New York. I would have been initiated, but I wasn't, because Prabhupada had to come back to India, and then he left. And, so I took Diksha from Satsvarup Maharaj. My relationship, I've been rereading the Srila Prabhupada Lilamrita, and it's mind-blowing. What Prabhupada, the miracles Prabhupada performed for us, how much he gave us, how much we owe him. We should be so grateful for the mercy that he's bestowed worldwide and continues to bestow through his books. तो हम लोग देखते हैं कि जैसे आप लोग बहुत सारे लोग कभी कभी सोचते हैं कि मैं श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ, लेकिन नहीं, मैं सतस्वरूप महाराज जी का शिष्य हूँ. मैं 77 में आया था, लेकिन प्रभुपाद उसके बाद वहाँ से वृंदावन इंडिया आ गए थे और उसके पास आप लोग जानते हैं कि प्रभुपाद जी अपना शरीर रख दिए यहाँ पे वृंदावन में. तो देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने क्या दिया हमारे लिए. तो आज भी हमारे मेरे जो उनके प्रति जो श्रद्धा है, वो जो भाव है, वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, गहरा है, और मेरा रिश्ता उनके साथ और ही बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है. So you don't have to be a disciple of Srila Prabhupada to have a very, very deep, loving relationship with him. You can associate. Once there was Prabhupada arrived in the San Francisco temple, and there were all these news reporters around. And one of them asked an unusual question. Swamiji, what will happen to your movement when you die? तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य ही होना है. यदि आप शिष्य नहीं भी हो तो आप उनके साथ जो संबंध है और भी गहरा होगा. इस विषय में हमें कहानी बता रहे हैं कि जब प्रभुपाद जी वहाँ आए थे तो एक रिपोर्टर आए और उनसे पूछने लगे कि क्या होगा जब आप चले जाएंगे तो आपके जाने के पश्चात इस आंदोलन का. I will never die, Prabhupada's response is, I will live always within my books. तो प्रभुपाद जी बोले मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं हमेशा अपने पुस्तकों के द्वारा जीवित रहूंगा. But you combine, strong sadhana practices, japa, studying Prabhupada's books, with service to his mission, and that relationship opens wide open. तो यदि आप अपनी साधना अच्छा करेंगे, जपा अच्छा करेंगे, पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जो श्रील प्रभुपाद जी के जो संबंध है उसके द्वार और भी बहुत बड़े होकर खुल जाएंगे. When we were starting the Mayapur Institute, we had a standard that everybody on the team had to chant their rounds in Srila Prabhupada's Samadhi. And my word, what Shakti came from that. It was incredible. Everyone was shocked at how quickly the MI developed. तो हम लोग देखते हैं कि जब MI जब स्थापना हुए थे तो उस वक्त हम लोग सभी लोग प्रभुपाद जी की जो समाधि है वहाँ पे जाके जपा करते थे, और कुछ ही दिनों में देखे कि MI कितना ज़्यादा डेवलप होने लगा, बढ़ने लगा. तो ये हमारे एक प्रभुपाद जी के जो संबंध है और उनके जो साधना, इससे ये सब चीज़ें हम लोग देख पाएँ. I'm going to end with one last reference that all of you can look up.
Okay, and this is Srimad Bhagavatam, 4th canto, 28th verse, 28th chapter, 48th verse. Okay, so 4.28.48. And in the purport, Prabhupada describes how when the Acharya comes, he brings order out of disorder. But when he leaves, to a certain extent, that disorder returns. But the sincere disciple does everything he can to bring that order back. So, तो हम लोग चतुर्थ स्कंद के 28वें अध्याय के 48वें श्लोक के परपट में देखते हैं कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब आचार्य लोग आते हैं तो जितने डिसऑर्डर होते हैं वो ऑर्डर में आ जाते हैं, और उनके जाने के पश्चात क्या होता है, ये सारे ऑर्डर फिर से डिसऑर्डर में होने लगते हैं। लेकिन जो लोग उनके सिंसियर शिष्य होते हैं या उनके जो फॉलोअर होते हैं, वो इस सारे डिसऑर्डर को भी होते हुए फिर एक ऑर्डर में आ जाते हैं। So, looking back, I discovered this verse, when I took up this new service. But looking back, since 1987, when I took up the service of being a National Sankirtan leader, I've pretty much been having these kind of services, and then starting the Mayapur Institute when very few devotees were studying Prabhupada's books. And my word, the reciprocation that Krishna gives with this, and with this new service that I've taken on, I'm getting more reciprocation, a higher taste with japa than I've ever had in my 46 and a half years. So it's so important to Krishna and Prabhupada that this takes place. By the way, we're recruiting. Anybody wants to join the team, we're here for you. So, we'll sign you up. तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं अपनी जो नई सेवाएं लिया, जो मायापुर इंस्टीट्यूट और बहुत सारे जो सेवाएं ग्रंथ अध्ययन का, तो उस वक्त बहुत ही कठिनाई आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छे से डेवलप होने लगा। और ये चीज़ें आप अपने निजी जीवन में भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपके जीवन में भी डेवलप होगा। तो यदि आप लोग भी चाहते हैं कि इस टीम का एक पार्ट होना, तो ये द्वार खुला है, आप हमें आके ज्वाइन हो सकते हैं। I'm just going to tell you a little trick, a little strategy that Rasa Mai is such a good translator, because he writes down notes on his hand with his pen, okay, so he doesn't forget the points. It's really smart, Okay, you didn't translate that part. Okay, you're in big trouble. Okay. All right, so thank you very much, and I'll carry a bunch of japa affirmations around with me, so anybody that wants them, I'm here for you, okay? And also, if you want to join the team, this is my sense is it will take place, it needs to take place all over the world, Brazil, all over India, all over America, because the golden age is predicted. It's going to happen. But we got to be serious to make sure it happens ASAP. That means as fast as possible. तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें होंगी, आप किसी भी देश में हो, ब्राज़ील में हो, कहीं पे भी हो, तो ये सब चीज़ें हो पाएगा। ये सब चीज़ें हो पाएगा कि हम कितने ज़्यादा इस चीज़ों के प्रति सजग है, सीरियस है, और ये सब चीज़ें हम पे निर्भर करता है कि हम इस चीज़ों को कितना जल्दी से जल्दी अपने जीवन में उतार पाएँ। तो हमारे पास कुछ बुक्स है जप अफर्मेशन के, तो यदि कोई चाहे तो आके हमसे ले सकते हैं। हरे कृष्णा Mahaprasade Govinde. No. Before that. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. So thank you very much Prabhu for Nectarian Srila Prabhupada Leela and lot many teachings on chanting and on different aspect of devotional service and how the mission impossible is accomplished. तो हम लोग प्रभु को एक बार धन्यवाद देंगे. We'll thank Prabhu by chanting one time of Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki Jai. So before you leave, तो आज का हमारा श्रवण उत्सव का तीसरा दिन है और हम लोग फर्स्ट हाफ मतलब पहला दफा हम लोग श्रवण उत्सव कंप्लीट कर चुके हैं. द सेकेंड हाफ विल स्टार्ट एट 4 o'clock. 4 बजे से श्रवण कीर्तन शुरू होगा और 4:30 से हमारा श्रवण उत्सव स्टार्ट हो जाएगा, लेक्चर शुरू हो जाएगा. तो सेकेंड हाफ में जो डिवोटीज हैं तो हिज ग्रेस श्रुतगीत प्रभु,
हिज होलीनेस सुभाष स्वामी महाराज एंड हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो आज शाम का लेक्चर 4:30 बजे से शुरू हो जाएगा, तो आप लोग कृपा करके 4 बजे आ जाएंगे। 4 बजे से श्रवण कीर्तन का पहला भाग दैट इज कीर्तन और भजन स्टार्ट होगा। तो अभी यहाँ पे कूपन बटेगा, तो आप लोग प्रसादम के लिए कूपन में लाइन में खड़ा हो जाइए। माता जी एंड प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा।